हेलो, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द टेक एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं DBMS और RDBMS को रिवीजन नोट्स के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक बने रहें। अभी हम बात करने वाले हैं DBMS पर। व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? डेटाबेस इज लाइक ए डिजिटल फिलिंग कैबिनेट वेयर वी कीप इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड. For example, imagine a school storing student detail like name, roll number and marks in one place. That's database. सिंपल लैंग्वेज में समझे तो आपके रिपोर्ट कार्ड के मार्क्स जिन्हें ऑर्गेनाइज्ड वे में सेटल किया गया है वे एक डेटाबेस का एग्जांपल है. नाउ व्हाट इज RDBMS? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ DBMS दैट स्टोर डेटा इन ए टेबल. डेफिनेटली अगर कोई डेटा टेबल की फॉर्म में अरेंज है तो उसे RDBMS बोला जाएगा और ये स्प्रेडशीट में जैसे डेटा हम कंटेन करते हैं वही RDBMS का दूसरा रूप है. ईच टेबल हैज़ रोज एंड कॉलम्स. रोज को डेटा एंट्रीज बोला जाता है और कॉलम्स को टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन बोला जाता है. यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप फर्दर इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि रोज डेटा एंट्रीज होती हैं और कॉलम टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन होती हैं. नाउ tables in RDBMS, which is very most important part of the RDBMS tables. In RDBMS, data is organized into tables and each table has a unique name. For example, students. Table might have column like student ID, name, grade. For example, table with 2-3 rows of student data. There are the 2 or the 3 rows in the student data like student ID, name Amit, grade A. This is the row 1 where student ID is 1 and the name of that child is Amit and the grade of that child is A. Another row is student ID 2, name Kaushal, grade B, like that. Now rows and column. Rows in database. Rows are also called tuples and record. It is also very important part of the rows. I am repeating. Rows are also called tuples and record. Rows are individual entries in table like one student's detail. Columns in the database. Columns are also called field. I am repeating, which is very important term. Columns are also called field. Columns are categories of information like name or grade. Example, in the students table, each row is a student and each column tell us something about them. You can see clearly the rows are arranged into the horizontal manner and columns are arranged into the vertical manner. Now, second important topic, keys in RDBMS. There are the 3 type of keys: primary key, foreign key and alternate key. In our syllabus in class 10 for the board purpose, we will discuss about these 2 keys. The first one is the primary key, second one is the foreign key. So what is the importance of the keys in the database management system? Keys in the database management system are essential for organizing, retrieving and managing data efficiently and accurately. Keys are like the foundation of database management system. They ensure every piece of data has its own identity, stay accurate and can be found quickly. They also tie related information together across table, making the database a powerful tool for managing information. Without key, a database would be slow. I'm repeating, without keys, a database would be slow, messy and prone to mistake, undermining its purpose of efficiently handling data. Now, keys are a special column that help us finding and connect data. So, what is the important in these 2 lines are keys are special columns. These are not rows. Keys are always columns. So, first one, what is the primary key? The primary key is a unique ID for each row. There is 1 marks or the 2 marks definition about the primary key. It is a unique identification terms for each row. Example, student ID can be the primary key because no 2 student have the same ID. बेहतर समझे तो स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बनाया जा सकता है. फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट का डेटा है जिसमें उसकी स्टूडेंट आईडी, उसका नेम, मोबाइल नंबर और उसका एड्रेस लिखा हुआ है. तो कौन से ऐसे कॉलम्स हैं जो रिपीट नहीं हो सकते? हमारे पास एक स्टूडेंट आईडी है जो हर स्टूडेंट की अलग होगी और एक मोबाइल नंबर सेक्शन. और अगर मोबाइल नंबर सेक्शन नहीं है तो हम स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बनाएंगे बिकॉज प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी रिपीट नहीं होगी. नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट द फॉरेन की. अ फॉरेन की इज ए कॉलम or a set on column in one table that connect to the primary key of another table in the database. It is like a bridge that links the 2 tables together, creating a relationship between them and helping to keep the data consistent. Now, there is an example of the grade table. This table stores students' grade in different subjects. It could look like this. The grade ID
student ID, subject and grade. Grade ID 1, 2, 3, student ID 1, 1, 2, and subject math, science, math again, and grade A, B, C. So in this table, student ID is the foreign key. It refers to the student ID in the students table which showing student each grade belongs to. समझे? तो अगर हमने ग्रेड ID को फॉरेन की बनाया तो ये एक ऐसी वैल्यू है जिसे हम प्राइमरी की बना सकते हैं. फॉरेन की में वैल्यूज़ मैच कर सकती हैं. जैसे ऐसे बच्चे जिनकी स्टूडेंट ID 1 है तो वो हमें दो रिकॉर्ड निकाल करके देगा, पहला जिसका ग्रेड 1 है और दूसरा जिसका ग्रेड 2 है. दूसरा फॉरेन की हम सब्जेक्ट को भी बना सकते हैं. जैसे मैथ किस किस क्लास के ग्रेड के पास है तो वो ग्रेड 1 और ग्रेड 3 को मैच करेगा. नेक्स्ट, relationship in database management system. Type of relationship in database management system. These are the three types: one-to-one, one-to-many, and many-to-many. This is once again the board examination 2 marks question. How many type of relationship are there in the database management system? So these are three types: one-to-one, one-to-many, and many-to-many. Now the relations RDBMS let us link table together using relationships. This keep our data neat and avoiding repeating information. Example, a course table can link to the students table to show which student take which course. Visual idea, add a diagram showing two table, student and course, connect by the student ID. So the very most important question, basic SQL command. SQL, the full form is structured query language, is how we talk to the database. Some simple commands are select, insert, update and delete. SQL को समझें सिंपल भाषा में कि हमारा कोई भी डेटाबेस प्रिपेयर्ड है और उसमें हमें एम्प्लॉयज़ या स्टूडेंट्स का डेटा फाइंड आउट या सर्च करना है. अपने डेटा को सर्च करने के लिए हम SQL कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें क्वेरीज कहते हैं. SQL कमांड की हेल्प से हम डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको शो कर सकते हैं डिस्प्ले पर, नया डेटा ऐड कर सकते हैं, डेटा में अपडेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं या डेटा को डिलीट कर सकते हैं. ये वो 4 कमांड्स हैं जो हमारे डेटाबेस को मैनिपुलेट करने में हेल्प करेंगी. फर्स्ट वन इज सेलेक्ट, सेकंड इंसर्ट, थर्ड वन इज अपडेट एंड द फोर्थ वन इज डिलीट. सो नाउ देयर इज अ क्वेश्चन. Suppose you have a database table called books with the following column: book ID, title, author and status. The question is write an SQL command to display the title and author of all books where the status is available. So our table is given below. The book ID 1, 2, 3, title are given, authors are given and status are given. Only the book ID 1 has the status available and the 3 as well. So expected output is title Adventure Iceland, it is available by author, and the Science Wonders, it is also available. So SQL command is given below. Now consider a database table called student with the following column: student ID, name, class and marks. This table stored information about students in a school. I am repeating the question. Consider a database table called students. Here the table name is students, column student ID, name, class and marks के नाम के बने हुए हैं. क्वेश्चन है insert a new student. A new student joined the school with the student ID 205, name Ravi and class 10th A with marks 85. यहाँ हमें एक स्टूडेंट को ज्वाइन कराना है जिसकी स्टूडेंट ID 205 है, नेम रवि है एंड जो क्लास है वो 10th है और उसके मार्क्स 85 हैं. इसके लिए हमें SQL क्वेरी लिखनी है. सो नाउ SQL क्वेरीज इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, यहाँ ये टेबल का नाम है और पैरेंथेसिस ओपन करेंगे स्टूडेंट ID, नेम, क्लास, मार्क्स. सेम ऑर्डर में लिखेंगे जो ऑर्डर हमें हमारे क्वेश्चन में गिवन है. पैरेंथेसिस क्लोज एंड नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यूज. वैल्यूज आर 205 is the student ID value, the Ravi is the name of the child, 10th A is the class and the 85 is the marks of that child. Now consider a database table called the student with the following column: student ID, name, class and marks. This table stored information about student in a school. Update the marks after a re-evaluation. Ravi's marks are increased to 90. Write an SQL command to update his marks in the student table. री-एवेल्यूएशन के बाद पाया गया कि रवि के मार्क्स 85 से 90 होने हैं. अब हमें उसके मार्क्स को अपडेट करना है और इसके लिए हमें एक SQL कमांड लिखनी है. तो हमारी SQL कमांड होगी अपडेट देन टेबल का नेम जो कि है स्टूडेंट्स, सेट करना है मार्क्स इज इक्वल टू 90, वेयर कहाँ करना है जिसमें स्टूडेंट ID इज इक्वल टू 205. नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर C. Delete a student, Ravi transferred to another school, so his record need to be removed. Write an SQL command to delete his record from the students table. So we are writing the delete command to remove the Ravi's record. Delete from
डिलीट दैट मीन्स फ्रॉम वी विल यूज़ बिकॉज डेटा को हमें कहाँ से डिलीट करना है, स्टूडेंट टेबल से, और कहाँ से डिलीट करना है, जिसकी स्टूडेंट ID 205 है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं नोड्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ए डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा. It is considered as the container of information. A database is basically a computer based record हो सकता है, डेटा है या इंफॉर्मेशन हो सकती है जिसे हम अपने डेटाबेस सॉफ्टवेयर में रखते हैं। डेटा इज रो unorganized fact and entries relevant to the user need to be proceed. The data are stored in such a way that they are independent of the program used by the pupil for accessing the data. So the database can be created with the help of the following structure: first character, and then field, and then record, and then file, and then after this the database will be cleared. Database management system, the DBMS, is a collection of programs that enable user to create, maintaining database and control all the access to the database. It is a computer based record keeping system. DBMS is a software package that manages database which are MySQL, Ingers, MyAccess. अगर आपके दो डेटाबेस सॉफ्टवेयर या पैकेज लिखने के लिए आते हैं तो आप MySQL और MS Access लिख करके आ सकते हैं। DBMS is actually a tool that is used to perform any kind of operation on data in database. It also maintains data consistency in case of multiple users. The purpose of a database is to bridge the gap between information and data. Data can be organized into two types. Flat file data is stored in a single table, usually suitable for less amount of data. This type of data obviously and usually is stored in a spreadsheet file. Second is a relational database. Data is stored in a multiple tables and the tables are linked using a common field. Relational is suitable for medium to large amount of data. Advantages of the database or the DBMS: reduce data redundancy, enforcing data integrity and data sharing. Reduce data redundancy means having extra copies of data. This way we don't have to keep the same data into the multiple files and we don't have to spend extra time searching for it in a big database. It also makes sure that all the data in the same and it saves us space on our computer. Enforcing data integrity means that the data in the database is accurate and consistent. We can also apply integrity consistency rules to the database to ensure that only correct data is to be entered. For an example, एक फॉर्म हमें फिलअप करना है और उसमें केवल मोबाइल नंबर की नीड है तो हम उसमें केवल न्यूमेरिक टाइप का डेटा टाइप अलाउड करेंगे जिससे यूज़र केवल फ़ोन नंबर में नंबर्स ही मेंशन कर सके। डेटा शेयरिंग: द डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस कैन बी शेयर अमंग मल्टीपल यूजर्स और एप्लीकेशन प्रोग्राम. Now the data security. The DBMS ensure that access of database is done only through an authorized user or unauthorized user. Some key features as a database. First, a database can have one or more tables. An address book example is a very simple one. In real world, there are many more details involved with it. Each table in a database contains information about one type of item. A record uniqueness in every table. It is important to be able to distinguish between different items having duplicate values. Uniqueness helps to avoid accidental duplication of record caused by user computer error. Every database table should have one or more field distinct as a key. You can assign a unique value to this key for different records may have similar names or address. Now, these are the component of the database. The first one, data, software, hardware and the users. किसी भी डेटाबेस को तैयार करने के लिए पहले रो डेटा होना चाहिए, उसे हम प्रोसीड करेंगे सॉफ्टवेयर की मदद से और हार्डवेयर की मदद से उसे एप्लीकेबल बनाएंगे एंड देन यूजर कैन परफॉर्म द नीड्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस टू कैरी आउट द प्राइमरी बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटीज. नाउ कम टू द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विच इज द RDBMS. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. RDBMS is a type of DBMS that store data in the form of tables. An important feature of the relational database system is that a single database can be spread across the several tables. For example, the RDBMS are Base, Oracle, DB2, SAP, CBSE, ASE, Infosys, Access, etc. Now come to the data integrity. Data integrity, it defines the primary key of the table, and domain integrity, it defines the type, range and the format data allowed in a table.
or in a column. Now come to the key fields, which are the very most important terms aspect to the board examination. The key is defined as the column or the set of column of the database table, which is used by identify each record uniquely in a relation. If a table has ID, name and address as the column name, then each one is known as the key for that table. The key field is a unique identifier for each record. Type of the keys and the field. The first one is the primary key, then second is the candidate key, and the third is the foreign key. And the primary key is a field or a set of fields that unique identify each record in a table is known as primary key. Each relation has at least one column for which row that must have a unique value. Only one column attribute can be defined as a primary key. It is मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म, केवल एक ही कॉलम में एक प्राइमरी की अलाउड की जा सकती है. एंड द फीचर्स ऑफ द प्राइमरी की आर इट डज नॉट अलाउ नल वैल्यूज, इट हैज़ ए यूनिक वैल्यू, इट अलाउज नंबर्स एंड टेक्स्ट बोथ. For an example, in a student table, student ID works as a primary key because it contains IDs which are unique for each student. Note, data cannot be primary key. Now come to the candidate key. Candidate key are like unique identifier for each row in a table. A table can have one or more candidate keys, and one of them will become the primary key. The candidate key for a relation is always the smallest possible key. For instance, the student ID column and the combination of first name and the last name are both candidate key for the student table. And the features of the candidate key are, for each row, the value of the key must unique identify the row. Now, attribute in the key can be discarded without destroying the property of the unique identification. Now come to the foreign key. एग्जाम में प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है. अ फील्ड ऑफ ए टेबल या relation that refer the primary key of another table is referred to as foreign key. The relationship between the two table is established with the help of the foreign key. दो tables के बीच में relation foreign key की help से बनाए जा सकते हैं. A table may have multiple foreign key and each foreign key have a different reference table. Now, data in a relational database management system is organized in the form of table. Database objects, the table, columns or field or attribute, rows, record or tuples. Now we are going to discuss about the table. A table is a set of data element that is organized using a model of vertical column and horizontal rows. And now columns or field or attributes, इसको तीन नामों से बोला जाता है. columns के नाम से, field के नाम से और attribute के नाम से. अभी हमने वीडियो में पहले भी स्टार्टिंग में पढ़ा है. A column is a set of data values of the particular simple type, one of each row of a table. The column provides the structure according to which the rows are composed. For example, first name, last name are the field of a row. Rows or column, record or tuples. A row, also called a record or tuples, represent a single data item in a table. Each row in a table represents a set of related data, and every row in a table has the same structure. Now, create tables by using two types. The first, use wizard to create the table, and then second, creating table using design view. Now next topic is the database type or the data type. Now we have the numerous data types. The first one is the numeric type, second alphanumeric type, third binary type, fourth data type or the date time, and other variable type. Now first discuss about the numeric type. Numeric data type in a database can be used for storing information such as mobile number, roll number, door number, etc. The different type of numeric data types available are listed here. You can take the screenshot of these data types and can revise for the board examination. Now come to the alphanumeric types. This data type is used to store information which has alphabet as well as numbers, for example address, book summary field, etc. The different type of alphanumeric types available in the diagram. You can also take this screenshot and you can revise for the board examinations. Now come to the binary types. The binary type are used for the storing data in the binary format, means 0 or 1. Binary data type in a database can be using for the storing photos, music files and the other files. Now date time format. Date time data type in a database can be used for storing information such as date of birth, date of admission, date of product sale, etc. Now come to the sorting of data.
what is it? Sorting means to arrange the data in either ascending order और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये 2 नंबर का क्वेश्चन लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, चेक इट आउट। देयर आर 3 टाइप ऑफ रिलेशनशिप विच कैन बी क्रिएटेड इन अ टेबल। द फर्स्ट वन 1-to-1 रिलेशनशिप, 1-to-many रिलेशनशिप एंड many-to-many रिलेशनशिप। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन लास्ट ईयर के बोर्ड के पेपर में पूछा गया है। In this relationship, we are talking about the 1-to-1 relationship. In this relationship, both the table must have primary key. Colon 1-to-many relationship. In this relationship, one of the table must have primary key. Colon and many-to-many relationship. In this relationship, no table has the primary key. Colon. And now the language of defining the database. These are 2: DDL and DML. The DDL means data definition language and DML means data manipulation language. Data definition language means DDL के अंदर कौन कौन सी SQL commands आती हैं। So ये command है create, alter, drop, truecat और rename. Create command is used to create the object in the database. Alter command is used to alter the structure of the database. And drop command is used to delete object from the database. And truecat command used to remove all the record from a table and rename command is used to rename an object. Now data manipulation language बहुत ज़्यादा important है. Now these are the 4 commands: select, insert, update and delete. You will get a question number 21 into the board examination जिसमें ये SQL की चारों commands use होती हैं। Definitely कहें तो DML की चारों commands use होती हैं। Select used to retrieve data from a database. Second, insert used to insert data into the table. Update used to update existing data within a table. And delete command obviously delete all the record in a table. So here an example about the select statement. A select statement retrieve 0 or more rows from one or more table. Select is the most commonly used data manipulation language command. To retrieve all the columns in a table, the syntax is select asterisk from table name. आपको एक छोटी सी हिंट देता हूँ। अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 21 नंबर के क्वेश्चन में कोई सेलेक्ट कमांड या कोई टेबल आपको गिवन हो और उसमें डेटा को शो करना हो, तो अगर आप सेलेक्ट एस्ट्रिक्स लगा कर भी आएंगे, मतलब इतना भी अगर आप लगा करके आएंगे तो भी आपको हाफ से 1 नंबर मिल सकता है। तो एस्ट्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इनटू द सेलेक्ट कमांड। नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू डिस्प्ले ऑल द डेटा फ्रॉम द टेबल शॉर्ट फ्रॉम द एम्प्लॉयज, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो ये कमांड आप लिख सकते हैं। नाउ सेलेक्ट कमांड के अंदर 2 कमांड और इस्तेमाल होती हैं जो वेयर और ऑर्डर बाय नाम से होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इज रवि, मतलब हमारे पास एक एम्प्लॉय नाम की टेबल है जिसमें से रवि नाम के कैंडिडेट को निकालना है या उसे शो करना है। नेक्स्ट, दिस इज अबाउट द अपडेट स्टेटमेंट. Update statement is used to modify a record in a database. The general syntax of the update statement as the follows. Now, update here will be the table name, set what need to be set, colon name equal to values and where the condition what is required. For example, to increase or update the salary of employee Ravi by 2000 in a table employee, then SQL command उसके लिए लिखनी है, तो हम SQL command लिखेंगे this one, update employee set salary इज इक्वल टू सैलरी प्लस 2000, बिकॉज ये इंक्रीमेंट है, उसकी सैलरी रिवाइज नहीं हुई है, उसकी सैलरी इंक्रीज हुई है, तो सैलरी प्लस 2000 वेयर कहाँ से, जहाँ फर्स्ट नेम रवि है। होपफुली आपको ये कमांड समझ में आ गई होंगी और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपको लिखनी आ जाएंगी। नाउ क्रिएट फॉर्म्स and reports using the wizard. So these are the 2 types we have already discussed earlier. What about the forms and the reports are? A report is helps to display the data in a summarized manner. आपका जो स्कूल का रिपोर्ट कार्ड होता है वो भी एक रिपोर्ट है और ऐसे ही डेटाबेस में एक पूरी रिपोर्ट बन करके हम डिस्प्ले पर देख सकते हैं। It is used to generate the overall work outcome in a clear format. अगर आपकी समझ में ये वीडियो आई है और आपको DBMS और RDBMS में डिफरेंसेस समझ में आए हैं तो वीडियो के लास्ट में कमेंट करें कौन सा DBMS का पोर्शन और RDBMS का पोर्शन आपको ईजी और हार्ड लगा, वो भी कमेंट में लिख करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।